हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम यहाँ पे HPCL 2026 की जो रिक्रूटमेंट है उसमें फाइनेंस ऑफिसर की जो पोस्ट है उसके लिए प्रोफेशनल नॉलेज की जो है वो सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, जिसमें अपन प्रोफेशनल नॉलेज के सभी टॉपिक्स जो है कवर करने का ट्राई करेंगे टिल एग्जाम तक। तो सीरीज स्टार्ट करने के पहले सबसे पहले एग्जाम पैटर्न देख लेते हैं कि एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है फाइनेंस ऑफिसर के लिए। देखिए, दो सेक्शन में जो है वो एग्जाम डिवाइड है। सबसे पहला जो सेक्शन है वो जनरल एप्टीट्यूड, जिसमें रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ्स रहेंगे, जिसके 85 क्वेश्चन रहने वाले हैं। और सेकंड जो है वो टेक्निकल नॉलेज है, मींस इनडायरेक्टली अकाउंट्स रिलेटेड जो है वो सभी क्वेश्चंस रहेंगे, जिसके 85 क्वेश्चंस रहेंगे। ऐसे टोटल मिला के जो है वो 170 क्वेश्चंस रहेंगे। टोटल मार्क्स जो है वो 170 मार्क्स है। ठीक है, और टोटल टाइम दिया है 150 मिनट्स का। तो ये जो है ये एग्जाम पैटर्न रहने वाला है HPCL के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे अपने को 170 क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करना है 150 मिनट्स में, जिसमें सेक्शन 1 जो है वो जनरल एप्टीट्यूड का है, जिसमें इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स के 85 क्वेश्चंस रहेंगे। और सेकंड जो पार्ट है वो टेक्निकल का रहेगा, जिसमें अकाउंट एंड फाइनेंस के जो है वो 85 क्वेश्चंस पूछेंगे। ठीक है, तो वैसे देखिए फाइनेंस ऑफिसर के लिए पीडीएफ भी अवेलेबल है, जिसमें टोटल 11 सब्जेक्ट्स जो है वो कवर किए हैं, और 11 सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज जो है 12,500 प्लस एमसीक्यूज कवर किए हैं। जिनको भी पीडीएफ चाहिए होगी, व्हाट्सअप नंबर दिया है, व्हाट्सअप पे डायरेक्टली मैसेज करके पीडीएफ आप परचेस कर सकते हैं। वैसे देखिए, क्वांटिटी एप्टीट्यूड के लिए भी पीडीएफ है एंड इंग्लिश ग्रामर के लिए भी। तो जिनको भी पीडीएफ चाहिए होगा, डायरेक्टली एक व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे दिया है, इस पे डायरेक्टली मैसेज करके आप पीडीएफ परचेस कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट पीडीएफ है, जिसमें आपके सभी जो टॉपिक्स है वो कवर हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आज फाइनेंस ऑफिसर के लिए टॉपिक 1 है आज का, बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड स्टैंडर्ड, IND AS बेसिक के कुछ एमसीक्यूज यहाँ पे अपन कवर करने वाले हैं। ठीक है, और ये जो एग्जाम है, ये जो एग्जाम की सीरीज जो है अपन ने स्टार्ट की है, ये टिल एग्जाम तक जो है वो स्टार्ट रहेगी, जिसमें अपन सभी टॉपिक जो है कवर करने का ट्राई करेंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। जैसे मैंने बताया, फाइनेंस ऑफिसर के लिए पीडीएफ अवेलेबल है, जिसमें सभी टॉपिक्स जो है वो सब्जेक्ट वाइज कवर किए हैं हुए हैं। जिनको भी पीडीएफ चाहिए होगी, व्हाट्सएप पे मैसेज करके पीडीएफ ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे बेसिक अकाउंट प्रिंसिपल एंड स्टैंडर्ड्स के कुछ एमसीक्यूज। तो देखिए, फर्स्ट है, अंडर IND AS रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन फ्रेमवर्क, when should an entity recognize revenue from contract with the customer? तो देखो ऑप्शन है, फर्स्ट when cash is received from customer, second when the contract is signed, third when the performance obligation is satisfied, and fourth when the invoice is issued. तो करेक्ट आंसर आएगा थर्ड, when the performance obligation is satisfied, because according to the IND AS 115, revenue from contract with customer is revenue recognized when control of goods or services transferred to customer. Next, second, which accounting principle assume that the business entity will continue its operation in the foreseeable future without liquidation? तो देखो ऑप्शन है, फर्स्ट मैचिंग कंसेप्ट, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, कंसिस्टेंसी कंसेप्ट एंड एक्करल कंसेप्ट। तो करेक्ट आंसर है सेकंड, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, बिकॉज द गोइंग कंसर्न कंसेप्ट assume that the business will continue operation from the foreseeable future. Next, third, under which accounting concept should expenses be recognized in the same period as the revenue they help generate? तो देखो ऑप्शन है, फर्स्ट प्रोड्यूस कंसेप्ट, मैचिंग कंसेप्ट, हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट, रियलाइजेशन कंसेप्ट। तो करेक्ट आंसर है सेकंड, मैचिंग कंसेप्ट। द मैचिंग कंसेप्ट रिक्वायर एक्सपेंसेस टू बी रिकॉग्नाइज्ड इन द सेम पीरियड एज रिलेटेड रेवेन्यूज। Next, fourth, which qualitative characteristics of financial information ensure comparability of financial statement over time? तो देखो ऑप्शन है, फर्स्ट कंसिस्टेंसी, प्रोड्यूस, मटेरियलिटी, फेथफुल रिप्रेजेंटेशन। तो करेक्ट आंसर है फर्स्ट कंसिस्टेंसी, बिकॉज consistency ensure accounting method remain the same across period, allowing comparability. Okay, next, fifth, which of the following is not a fundamental accounting assumption according to the accounting standards? तो देखो ऑप्शन है, फर्स्ट गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी, एक्करल, मटेरियलिटी। तो करेक्ट आंसर है फोर्थ, मटेरियलिटी, बिकॉज फंडामेंटल assumption आर गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी एंड एक्करल. ओके, नेक्स्ट, सिक्स्थ, which IND AS primary deals with the presentation of financial statement? तो देखो ऑप्शन है, फर्स्ट IND AS presentation of financial statement डायरेक्टली डिफाइन कर ही दिया है,
INDS 7, 16 and 18. तो करेक्ट आंसर आएगा फर्स्ट INDAS 1. Its specific overall requirement of presentation and structure of the financial statement. Next, seventh, which accounting concept require that all significant information influencing decision making must be disclosed in financial statement? तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट materiality, prudence, full disclosure, consistency. तो करेक्ट आंसर है थर्ड full disclosure, because full disclosure principle require all relevant information to be disclosed. Next, 8. Under INDAS, financial statement are prepared primarily on which measurement basis? तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट रिप्लेसमेंट कॉस्ट, हिस्टोरिकल कॉस्ट, फेयर वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू. तो करेक्ट आंसर है सेकंड हिस्टोरिकल कॉस्ट, बिकॉज traditionally financial statement are prepared on historical cost basis. Through INDAS also allows fair value measurement in some standard. Next, ninth, which concept ensure that personal transaction of owner are not mixed with business transaction? So the option है first money measurement concept, dual aspect concept, business entity concept and cost concept. तो correct answer है third business entity concept, because this is the separate the owner finance from the business. Okay. Next, 10th, which accounting concept require recording transaction only when they can be expressed in monetary term? तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट कॉस्ट कंसेप्ट, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, एक्यूरल कंसेप्ट, मैचिंग कंसेप्ट. तो करेक्ट आंसर है सेकंड मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, बिकॉज मनी मेजरमेंट कंसेप्ट रिकॉर्ड ओनली ट्रांजैक्शन मेजरेबल इन मनी. वैसे देखिए क्वांटिटी एप्टीट्यूड के लिए पीडीएफ अवेलेबल है जिसमें 25 चैप्टर प्रैक्टिस सेट विद सॉल्यूशंस दिए हुए हैं. जिनको भी पीडीएफ चाहिए होगी व्हाट्सएप नंबर दिया है, व्हाट्सएप पे मैसेज करके पीडीएफ आप परचेज कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th, अंडर INDAS वी स्टैंडर्ड डील विद प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट ओनली. तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट है INDAS 16 इज अ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट. ओके, INDAS 16 govern recognition, measurement and depreciation of PP, means property, plant and equipment. Next, 12th, which concept implies that accounting method once adopted should be applied consistently from one period to another? तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट कंसिस्टेंसी कंसेप्ट, प्रूडेंस कंसेप्ट, एक्यूरल कंसेप्ट, रियलाइजेशन कंसेप्ट. तो करेक्ट आंसर है फर्स्ट कंसिस्टेंसी कंसेप्ट, बिकॉज इट ensure comparability across accounting period. Next, 13. According to INDAS framework, which qualitative characteristics require information to be free from error and bias? देखो ऑप्शन है फर्स्ट comparability, second verifiability, third faithful representation and fourth timelineess. तो करेक्ट आंसर है थर्ड faithful representation, because it require information to be complete, neutral and free from error. Okay. Next, 14. Under INDAS, which statement report cash inflow and outflow during a period? तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, सेकंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, थर्ड बैलेंस शीट एंड फोर्थ कैश फ्लो स्टेटमेंट. तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे फोर्थ कैश फ्लो स्टेटमेंट. द कैश फ्लो स्टेटमेंट शो कैश फ्रॉम द ऑपरेटिंग investing and financing activity. Okay. Next, 15. Which accounting concept is reflected in the equation assets equals to liability plus equity? Okay. देखो ऑप्शन है फर्स्ट मैचिंग कंसेप्ट, ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट, प्रूडेंस कंसेप्ट, रियलाइजेशन कंसेप्ट. तो करेक्ट आंसर है सेकंड ड्यूअल एक्सेप्ट कंसेप्ट, बिकॉज दिस स्टेट दैट एवरी ट्रांजैक्शन हैज टू इक्वल इफेक्ट फॉर्मिंग द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन. Next, 16. Under the accrual basis of accounting, which of the following transaction is recorded even through cash has not yet been received or paid? देखो ऑप्शन है फर्स्ट एडवांस फ्रॉम कस्टमर, सेकंड कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय ओनर, थर्ड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड फोर्थ कैश सेल्स. तो करेक्ट आंसर है थर्ड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बिकॉज under the accrual concept, expenses are recorded when incurred, not when paid. Okay, and outstanding expenses represent liability recognized before payment. Next, 17. According to the conceptual framework of INDAS, which qualitative characteristics enhance the usefulness of financial information
by allowing user to identify similarity and differences. तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट रिलेवेंस, कंपैरेटिबिलिटी, faithful representation, verifiability. तो करेक्ट आंसर है सेकंड compatibility, because compatibility allows user to analyze financial statement across company and periods. Okay, next 18, which accounting concept justifies charging depreciation on fixed asset every year? तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, मैचिंग कंसेप्ट, प्रूडेंस कंसेप्ट, कॉस्ट कंसेप्ट. तो करेक्ट आंसर है सेकंड मैचिंग कंसेप्ट, बिकॉज it ensure that cost of asset is allocated over the period benefiting from their use, which is done through depreciation. Next 19, which of the following standard deal with accounting for inventories under Indian accounting standard? तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे फर्स्ट IND-AS 2 फॉर इन्वेंट्रीज. इट इज अ प्रिस्क्राइब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर इन्वेंट्री वैल्यूएशन एंड कॉस्ट टर्मिनेशन. ओके, next 20, if company deliberately delay recognizing expenses to show higher profit, which qualitative characteristics of financial reporting is primarily violated? तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट कंपैरेटिबिलिटी, प्रूडेंस, फेथफुल रिप्रेजेंटेशन, टाइमलाइननेस. तो करेक्ट आंसर है थर्ड फेथफुल रिप्रेजेंटेशन, बिकॉज deliberately delaying expense recognition create biased financial information violating faithful representation. Okay, वैसे देखिए फाइनेंस ऑफिसर के लिए पीडीएफ अवेलेबल है, प्रोफेशनल नॉलेज की, क्वांटिटी एप्टीट्यूड, इंग्लिश ग्रामर, सभी पीडीएफ अवेलेबल है. जिनको भी पीडीएफ चाहिए होगी व्हाट्सएप नंबर दिया है, व्हाट्सएप पे मैसेज करके पीडीएफ आप परचेज कर सकते हैं. जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि नोटिफिकेशन थ्रू सभी वीडियोज आपको मिल जाए. तब तक के लिए धन्यवाद.